Garved Anand. We are just starting in 5 minutes, waiting else to join. Okay, so meanwhile, I need you guys up this year. So, like, if you're from first year, just write in the comment section one. If you're in second, write second. In third, then write third year. In case you have graduated, do mention that too. Meanwhile, Raghav, till then, you can start with your introductory speech. Okay, ma'am. Thanks. So, hello everyone. I am Raghav Tyagi from the core team of AR Club. Being in a tier 3 college, we always felt the lack of technical and overall growth activities in our college. AR Club organizes events, sessions, hackathons with industry experts and companies to boost student learning and reward them with the swags and prizes. So, thank you so much for showering love and support on our previous events. We have completed our first 1 year today, and we are a strong 1200 plus family today and still counting. In our community, a lot of people didn't know about open source and GitHub and Hacktoberfest. To educate and aware them about the events and how they can start their open source journey and grab t-shirt and sticker from DigitalOcean, today we are here with Miss Somli Mukherjee to guide you on the steps to grab goodies in Hacktoberfest 2022. She is the GDSE Cloud Lead, GDG member, Hack to Skill Lead, Unstop Chief Igniter, Google V Scholar, Google Women Tech Makers Ambassador and Dehradun first ever DevFest organizer. तो हमारे पास सोमली मैम है और जैसे मैंने आपको इनकी डेजिग्नेशन बताई तो ही इज़ अ एक्सपर्ट स्पीकर ऑफ द सेशन टुडे एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी. I hope this session will add value to your upskilling journey. Now I would like to hand over the virtual stage to Miss Somli Mukherjee. So ma'am, now you can start the session. I think most of the people had joined. Yeah, actually, I was kicked out of the session. Yeah. So, hey everyone, how are you guys doing? So I checked your comments. Most of the people are from second and third year. So that's great. Yeah. Am I visible and audible? Because there are some glitches on my StreamYard platform. Just type in the comments so I know. Okay, great. So disclaimer is I am having events since like 3 days in a row. Haven't slept for 2 nights. So I might be a little off topic because मैंने script नहीं prepare किया है. But like I have contributed to Hacktoberfest 2 times continuously, and it will be my thrice. Like I'll be hitting hat trick this time. So let's hold up and देखते हैं क्या. Also, I request you guys to stay handy with your laptops and personal computers because we are going to do a hands-on session at the end. And जिन्होंने सक्सेसफुली सारे स्टेप्स करेंगे we are going to give them special shout out on the social media platforms of AR Club as well as on my platform. So like stay tuned.
ऑल्सो अगर आप लोग नहीं करते इवेंट ध्यान से अटेंड, सो आई हैव माई बैकअप ऑडियंस, सो आई सजेस्ट यू गाइस टू पढ़ लो, नहीं तो उन पे जाना पड़ेगा मुझे. Yeah. So meanwhile, I just want to ask how many of you do have a GitHub account? Yes वाले are good. Those who don't have, just let me know. किनके पास अभी GitHub account नहीं है? Okay. All right. So जिनके पास नहीं है, I request you all to go to github.com. Just search क्योंकि वो mandate है, because either that's GitLab or GitHub, but GitHub is preferred. So Google करो अपने अपने PCs में github.com and create an account there. It'll take less than a minute. I'm waiting. And in case you face any doubts, just post them in the comment section. I request the moderators to keep a check कि अगर किसी का कोई doubt आए, so just let me know. Okay, regarding that Microsoft Campus tour, we'll get back to it later, but in today's session we are going to focus on open source, GitHub and Hacktoberfest basically. Okay, so for those who don't have a laptop, you can do it on your mobile phones too, that's not an issue, but yeah, laptop is preferred. Yes, I have just turned my camera off, don't worry about that. Just create a GitHub account, everyone. Are you done? Let me know in the comment section if you are facing any issues. Very good. How to create for that? Google github.com, then open that first link, which is GitHub's what do I say, website, and then there might be a sign up or sign in option anywhere. Just sign up, fill the details. If you want to do it quick, just simply sign in with your Google ID, so it'll take like 20 seconds. Do let me know when it's done. Done? Okay, so when we move forward now, I want you guys to okay. Is my screen visible? Okay, we'll give a minute more. Till then, let me know, is my screen visible? Okay, my screen is not visible. Okay. Yeah. Is it visible now?
Yeah. Okay, so I need you all to Google hacktoberfest.com. Hacktoberfest.com. And then this website clicks. That's hacktoberfest.com, their official website. Registrations are open now. I need you guys to just register. Click on start hacking. Then give access to your GitHub profile and basic. Like I have already registered for it. So here's my profile. But you guys need to create one before moving forward. Do it right now because बाद में you guys will procrastinate and बहुत कोई नहीं करते. अभी हाथों हाथ कर लेते हैं. It'll be good for you. Once you are done, just let me know in the comments that yes, registered on Hacktoberfest. Because yes से I am not getting an idea that वो yes किसके लिए है. Registered on Hacktoberfest. Very good, Ishpreet. Okay, meanwhile, I'll ask the moderators to just add my presentation screen on StreamYard 2. You have to give access to my presentation screen too. Okay, so how to register? Yeah, perfect. Thank you. So just Google hacktoberfest.com and वहाँ पर you will see start hacking at the top right corner. I'll share the screen so you can see again. Google hacktoberfest.com. Click on start hacking. That's on the top right corner. Register for the event and you're good to go. We can now just move to the event. हो क्या? अब आगे बढ़ूं? Shall I move forward? सबका अकाउंट बन गया उस पर? No, you do not need to create an account on Holopin as of now. But kindly pin his question. Do we need to create an account on Holopin? Yes. So we do not need to create one right now, but like it's optional because they are providing really cute online badges. You can find those on my Twitter platform. And yeah, you can. It's optional because it'll just reflect on your GitHub profile, but it's not compulsory. You can do it later too. Site doesn't show anything. ऐसा होना नहीं चाहिए. There'll be a start hacking on the top right corner.
So I believe everyone is done now. So basically Hacktoberfest. So होता क्या है इसमें, like every year annually Digital Ocean एक organization है to celebrate the essence of open source. They organize Hacktoberfest, and as the name suggests, it takes place in October. And this event, people from various background, doesn't matter if you're from a technical background, if you're not from a technical background, nothing else matters. It is just to celebrate the essence of open source. And in case you think that ये आपके लिए नहीं है because you're a beginner, that's not the case, because Hacktoberfest specifically targets the beginners, because it works as a stepping stone into the world of um, open source. Okay, why is my Ma'am, camera going like this? Ma'am, Karthik Batra is asking what we have to select in the check boxes which are appearing below the profile pic. Checkboxes while. Okay, I don't exactly remember that, but yeah. Uh, just there's a few terms and conditions. So just read them एक बार बस ऊपर ऊपर से देख लो and then agree to them, because जो उनके sponsoring partners होते हैं, they need to get some access to your data or something, because they might contact you for future events. So just check the boxes whichever you're comfortable with, and you're good to go. Yeah. So I was talking about Hacktoberfest. Also, the main thing is everyone who there's a basic task just to get you begin with. Whoever completes those 4 tasks are eligible for a Hacktoberfest T-shirt, which is powered by DigitalOcean, and they have stickers from their sponsoring organizations such as this AppWrite, etc. So you'll get stickers, you will get a really cool t-shirt. uh, all alternatively, you can just use that to plant a tree. Like either you choose a t-shirt as your swag, or you plant a tree on that name. Ma'am, Garvit Anand is saying after registering it says, oh, you haven't made any pull or merge requests yet. Yeah, okay, like once you register, you are now registered as a Hacktoberfest attendee, and now you have to merge 4 pull requests to be eligible for the t-shirt, or like winning the game, if you call it in gaming language. So that's okay, we'll do it right now. We'll merge a PR right now by the end of the session. It'll be a hands-on आप session, like किसी I said. तानिया तानिया रहेजा आप किसी से भी कर सकते हो गिटलैब और गिटहब बट हमारी साइड से गिटहब इज प्रेफर्ड. Yes. Okay, so moving forward, today's agenda will be ice breaking session. We had that already. First year, second year, third year, fourth year students. Also, I want to know that how many of you are from non tech backgrounds? Just mention what background you're from, because I said nah, Oktoberfest is open to all. Background doesn't matter if you are a tech or non tech guy. Just type in the comments from which background are you, in case you are from a not so technical background. Like it can be what do I say, BCom or arts or anything like. Yeah. No, not the tech people. I'm mentioning about It non-tech is guys. basically for non-tech. Okay. ऑब्वियस है यार टैग तो होंगे ही बट वी आर आस्किंग फॉर नॉन टैग. तो प्लीज नॉन Oh, टैग that's अपने fine. आप कमेंट्स That's में fine. बता That's सकते fine. हो. You can flaunt your technical skills too. That's okay. Yeah. So that's great. Okay, so like Hacktober, I'll talk about open source, GitHub, Git, basic terminology so you don't confuse. Then we'll come to Hacktoberfest, the perks, the swags, what is the eligibility criteria, what are the rules, the domains,
What level of code should you know? Then there's tips for beginners and a hands-on session. Okay, so before moving, I'll mention a term, and I need you guys to answer in yes or no. So, how many of you have imposter syndrome? In case you don't know, like imposter syndrome is when you feel that यार सबको सब कुछ आ रहा मुझे कुछ नहीं आ रहा, like you're with your peers and you're like सबको यहाँ पे सब कुछ आता है and I'm the one missing out, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ. So this is known as imposter syndrome. How many of you guys have it? मैम सबसे पहले तो मैं ही हूँ, मैं खुद हूँ. क्योंकि मुझे ये बहुत बार होता है ऐसा कि मतलब मेरे साथ क्या मुझे लगता है कि ये दे आर डूइंग न्यू न्यू थिंग्स, और उसके बाद कि मैं तो कहाँ ही स्टैंड करता हूँ, कुछ नहीं आता तुझे राघव, यू आर नथिंग. Exactly. Actually, hota kya na, because we are from technical background, and technology is like, every 10 days a new technology is coming into the market, and people are shifting to that technology, and so it's quite obvious to feel such. Yeah, I can see the comment section. Everyone is. So this was just to let you guys know that you are not alone. 60% of the population, like the corporate world people, have imposter syndrome. And it is possible that even after a few decades or something, even if you become the CEO of an MNC, you will still have that imposter syndrome, because that's a common human tendency. So now we know that we do not need to panic. It's okay to feel like मेरे को कुछ नहीं आता, but the key is करते रहो. Eventually you will do it. Like, okay, like जिस दिन you'll achieve something, you'll be like ये तो हो गया. It was that simple. So open source. Now, how many of you have idea about open source? Can you please type in the comment section just the keywords, like chota sa comment, that what exactly is open source? It's okay if you're wrong. I just need to know your point of views, because many a times we are all here together to learn, right? आपको कुछ आता होगा, मुझे कुछ आता होगा. Together we all will learn. This is what community is. This is what AR Club is doing. Available for everyone. Free software available to all. Guys, can we please feature them one by one? Whoever is answering, just give them a screen share of like 2-3 seconds. The comments. Okay मैम, Yeah. free software available to all. Wow. Not Just known. do it a little quick, like 2 seconds each. So we see what In everyone thinks which we about can it. change in code my according. People share their problems and code for solving problems too. Great, great minds. So Aryan Exactly. Panchal is saying anyone can make his contribution to make it better. Yeah, yeah, good. Okay, so since you guys already have some idea, kudos to that. You're already doing good. So just like now we know what open source is. Like there's a project, and that source code, is available to the public, to the general. So in case you just like, let's take for example Facebook's website, all the major MNCs and all the major technical products are open source today. Almost there has been a 140% increase since last few decades in open source market. All the companies are just simply putting their source code on the internet. So like even they benefit from this. Is होता क्या है, if you like a particular website and if you are developer, you just go to their source code कि like ये बना कैसे. And while checking, so let's imagine you found a bug. A bug is something is like you saw यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, there's something wrong there. So what you can do is you can just pull that whole code on your PC and you can change it, and you can see कि if I change this step, if I change the color from red to black,
Will the website look fine now? And you find, yeah, it's better. So in case you are if somehow manage the efficiency, or you're somehow able to contribute to that project, and you feel that it's a legit one, not like you just change any spelling, it does not work like that for big organizations. So you just simply do what? You send them a request ki I just went through your code and I found this error and I replaced it. So you request them ki that was your code. I'm sending my edited code here, and then like if you feel that it's a legit edit, like if you feel that हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, if you feel that there was an error which that guy sorted, he'll simply merge it to the main source code. So just imagine I'm a normal girl working and studying and hustling, and I found a bug on a startup. Let's imagine Amazon's website. I just request them that, hey, I found an error. Why don't we change it? And in case they found it legit, they'll simply merge my request to their original code. And this is exactly what open source is about. I'm sorry to interrupt, but there is a question coming from Khushi Narang where we can contribute to the open project, solve their errors or problems. Yeah, we'll come to that. Like, firstly, we know what is it. Then we'll go to how part. Don't worry, सब मैं बता दूंगी. Let's have patience. And once we're done with the theoretical concept, then we'll have a Q&A. And once we're in the hands-on session, फिर से Q&A होगा. So all your queries will be answered. And there's one more thing after register progress, it shows 0 out of 4. So as I said, there'll be 4 tasks. So since abhi humne kuch nahi kiya, it'll show 0 out of 4. And by the time we progress, it'll be 1, 2, 3, and 4, and we are good to go. So moving to the next slide, there's open source. Open source code is originally made available to freely to everyone, and everyone is free to edit it, modify it, share it, and even you can learn from it, right? Like if you are a website developer and you find a really good project, what you'll do is simply go and import their code, source code, on your what do I say, personal computer, and then you can simply like check na ki what if I change this, what happens here. That's the best way to learn. So yeah, and what is open source community? Like if I contribute to open source by modifying these things, like if we know what open source is, if you contribute to open source, then together we form a community known as open source community. And in today's day, in today's era, open source community is probably the largest growing community in around the world. And some example of very famous organizations who have simply open sourced their projects, such as there's VLC Media Player, Mozilla, Linux, Python, etc. So I have a question. We all have used VLC Media Player once in our lives, right? So just type in yes or no, like whether you have felt the same or not. Earlier, VLC Media Player was like, it had so many errors, so many bugs and glitches. It used to malfunction. But if today we just stream on VLC Player, it works so seamlessly. Do you guys agree? Like earlier, VLC Media Player was not that much efficient. It had some errors, like कभी बंद हो जाता था, कभी video play नहीं होता था. But today, if you try it, it works so fluently. Yes. So do you know why it happened? Because when they open source their project, now it's accessible to the public, right? So the public, like if you're an organization of 10 people, like mainly 10 people are working on it, and you people are discussing that. And then if you take your product to like in the market, like there are billions of people, billion of developers, and they show them that यार मैंने ये बना देखकर बताना कैसा है. So even if single guy gives a little suggestion, just imagine वो छोटे छोटे suggestions मिलके all together, how will they change the main project? So yeah, so error is volume, because but how did they know that यहाँ पे error आ रहा है, and what are the solutions? So the open source people like us, because developers ही करते हैं at the end of the day, right?
So they say that, hey, we can do this change here, we can optimize it this way, we can, use this tech stack instead. And gradually, over a period of time, after many modifications, we have a, ultra purified version of it, and it really works amazingly. Yeah. But yep, okay. So there's a question by Garvit Anand. Please feature that. Yeah, ma'am, here it is. But your project can also be misused then. Okay, so the thing is, like I said, just imagine there's a Facebook website and you think कि आज मैं Facebook के लोगों को green कर दूंगी, and you go and take their code and just make it green, and you remove the friend request option from their database or code. Like when you refresh the website, there'll be no option, no concept about friend request, and you will get a bunch of errors and stuff. Just imagine a Facebook चला रहे हो and suddenly boom, the logo is green, the friend request section is gone. How will you feel? So this is not how it happens. Like I said, you request them that make this change. So what happens is when you import that code on your local PC, that's a copy. That's not the original one. So वो copy पे you can alter and see the changes. Then you send your copy of code कि भैया मैंने ये किया, like check it once, and then they compare, the reviewers, the maintainers of that particular repository or project just go through what changes did you make, and if they find any significant changes, then only they accept it and merge it to the main project. And that is how your contributions count in. That is what a pull request is. Like they can even reject that, because if you just do any nonsense stuff, like जिसका कोई meaning नहीं बन रहा, so they'll simply decline your request ना, because they have a website to run. So yeah, it cannot be misused. Moving forward, why contribute to open source? Well, practically saying, I have seen my seniors getting job in open source, and it is such a beautiful medium to express your skills, because you know you are doing some work, some real life work. You are not learning any theoretical concept. So अगर आप real life work कर रहे हो, there are recruiters out there who recruit directly from your GitHub profile. They check it, and if they find your work interesting, like अगर आप open source में contribute कर रहे हो, you'll only do it when you know it, right? If you don't know what JavaScript is, you cannot make any change in JavaScript project. So if you are applying any changes, that means that you know how it works, you have implemented it. So job scope बहुत ज़्यादा होता है open source में, and moreover you gain a lot of recognition. Some companies even provide some sort of monetary compensation as a reward, because if you find a bug, then they'll just announce ki, hey, thanks for pointing out. You'll get a mail that thanks for pointing out the error, and as a token of appreciation, we have $300 USD dollars for you. It works like that. Ma'am, here is a question from Harpreet Kaur. Ma'am, I don't have laptop, so I can do the work on my phone. You can do that, but not an issue. You can do that, but I'll prefer, like अभी तो मैं जो कराऊंगी वो छोटा सा कोड होगा, like कोड भी नहीं है वो. I'll just make you do something to understand, like होता क्या है ये, in easy words. But when you will originally contribute to Hacktoberfest and open source, then you guys need to have your laptop, because 100 lines of codes, and you will have to go through it all to find कि error कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कहाँ पे मैं change suggest कर सकती हूँ. So it's okay if you're doing it on phone right now, but I'll suggest that switch to laptop. And when the main event comes, you will have to do it on laptop. Also, I hope everyone has now registered on Hacktoberfest profile, because very soon registrations are closing. So I suggest you not to procrastinate. 1 minute lagega, just do it. Okay. So moving forward, Git versus GitHub. Okay, so how many of you guys have worked on GitHub or have idea about Git and GitHub? Can you tell me the difference between them? What's the difference between Git and GitHub? Guys, if anybody knows the difference, please tell us. Yeah, and make sure that the comments get featured here right now. Okay. Okay, ma'am. Yeah.
Do you have any answers? Yeah, Yeah, ma'am. Git is a tool. Yeah, that's a tool, but it's okay. Typing errors are fine. GitHub used to post static websites. Git is a tool. Super King Universe is saying. Garvit Anand and Git help in management of source code. Git Okay, and so GitHub are good version means control that system. yeah, people do have some idea. Okay, so yeah, you guys are somewhat or like even if you can't express it, you are right because Git is basically a software like where you can install on your own computer. Git you can install on your own computer and on your servers, and you have the access to use them. You can use it for storing or fetching data and tracking any changes that you have made previously to your files. And they are usually held with the source code because whatever changes are made in the source code, we use Git to analyze that and keep a track on that. Whereas on the other hand, GitHub is a website. Git came into the market in early 2000s, and GitHub was launched many years back in 2008. GitHub is a website that makes Git available via the internet to anyone who signs up. Like, so they don't have to install Git on their own computers. So this is how it is mostly a cloud-based software. Many of you have idea about cloud, so this is a cloud-based software. And via GitHub, we can use Git. And that's not only like with GitHub here. There's GitLab in market. There are some other um, organizations in market too, but GitHub, rules the market somehow. Yeah. And yeah, many people are using GitHub as version control tool. Sorry, Git is a version control tool. That's right. That's completely right. I just explained it in layman terms. Yeah, as we can see, it was first released in 2005, and then GitHub came into play in 2008 by Microsoft. And Git was originally maintained by the Linux Foundation. It's a version control system, etc. Super King Universe is saying, in my In thoughts, my we also thoughts, know about hardware knowledge because every software optimized with hardware for best performance. Yeah, it is absolutely right. सॉफ्टवेयर की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा हार्डवेयर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. very well, very well. What's your name? Super King Universe. Can I know your real name? Yeah. So in case he just tells his name, just mention it here so people know who's this Super King Universe is. ओके. Moving forward, we have Hacktoberfest. Finally, Agya. Okay. So Hacktoberfest is held by DigitalOcean. DigitalOcean is an organizer every year. And what it does, it maintains a month-long celebration in October month just to celebrate the essence of open source. Now, like, मैम, uh, ही इज आर्यन, I हिज नेम इज आर्यन. yeah, it's okay. Just show it there. No need to particularly mention verbally. It's fine. Yeah. ओके. So like maintainers from throughout the world come together and contribute to open source this month long. Like it just gives a kickstart to your career into open source. So you can just figure it out somehow, and also no contribution is way too small or way too big. Like you don't need to feel like I said, imposter syndrome. Just kick imposter syndrome out of your mind right now, because everyone, like almost 80% of the people I feel are new here. So yeah, do not worry about that, it's fine. We'll do it together, both easier. Moving to the next slide. Here's the t-shirt. ये 2020 मिला था. It was somewhat similar to 2021 वाला. And I this is mine. And for the 2020, I opted for planting a tree, so I do not have a t-shirt for that. Yeah. So now the thing is, we are now registered in Hacktoberfest, but in what domains? So majorly there are three domains. There's a maintainer, there's a contributor, and then there's the company. So what contributors do is like अब आप सोचो. First let's talk about maintainers. If you want to contribute to a project, वो project होना भी तो चाहिए, right? नहीं तब contribute कहाँ पर करोगे? So
They are the companies and maintainers who provide you these projects to work upon. जो companies होते हैं उनके projects होते हैं and maintainers are the people who are on the other side of the bridge. Like आपने आज pull request भेजा, अब उसको check करके accept कौन करेगा, right? Like उसके लिए भी चाहिए ना, so we call them maintainers. So they are the maintainers. Then we have the companies, and we as students, we are the contributors. Like it's not necessary that you need to be a student to be a contributor, or you cannot be a maintainer. It's pretty fine. You have a project, you just put it on GitHub. You use tags Hacktoberfest. You use tags good first issue and stuff, and you are good to go for Hacktoberfest. So as of now, we'll be mostly focusing on the contributor part. If you're interested in being a maintainer, you can simply just text me, DM me on my Twitter handle. Hey Raghav, can you just show my Twitter handle as the comment on screen? There must be an option to just like show your banner. Just maintain my Twitter handle there. So in case you want to be a maintainer, we can talk on that. Just DM me on LinkedIn or Twitter Yeah, for ma'am, that. I am sharing the link of your Twitter handle. Great. Okay. So as of now, mostly we're focusing on contributors. Also, it's not like if you're a maintainer, you won't get a t-shirt. You will get, doesn't matters anyhow. Anyway, if you contribute to open source under the domain of Hacktoberfest, you are eligible for a t-shirt and swags and that recognition. For builder project, we should have knowledge like front end. Does not matter exactly front end, like there'll be projects of AI ML, there'll be projects of Python, there will be projects of JavaScript, backend projects there'll be front end, every domain, every single domain. And I'll come to that later. It does not particularly have to be a technical change which you need to do, because yeah, a project is based on a skills. Like it can be non-code contributions. We'll come to that later on. Yeah. So moving forward, how many of you guys find this t-shirt cool? Just let me know. Like, are you guys excited for this? Like, for me, I was really excited after 2 months. जब मेरे घर में आया, I just wore it and clicked a picture, and it was so good. I felt so मेहनत का फल. So that was my मेहनत का फल, because I had worked hard, and I didn't have anyone to guide me on Hacktoberfest. That is why I am here to guide you all, because I don't want you people to face the Ma'am, same issues which I there had is a to go. question we are having. मैं किस पेज पर एक्सेस कर सकता हूँ क्या? We'll talk on that. We'll talk on that. I suggest that firstly, let me finish. मैं सब बताऊंगी एक एक करके. I'll touch each and every point. उसके बाद, if I miss someone, just let me know. I'll give you time for that. Okay, ma'am. Yeah. Okay, so uh, eligibility. Yeah, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा. Firstly, it's open to all. And what's the only thing you need? The only thing you need is enthusiasm and t-shirt motivation, because we know half of the people here are majorly for that free swags and t-shirt. Once when I was in first year, I was too running after t-shirt, and that's fine, because who doesn't like gifts? So yeah, it's completely fine to like t-shirts, and even if you are here for it, isi bahane you will learn what open source is and how to contribute. In fact, even they have the same motto only. So yeah, that's fine. How? Ma'am, I am So also very excited to for getting a T-shirt because it's my first time. okay, then you should like you must do it. Yeah. Yeah, ma'am. So can before moving forward, let's just check out their website once. Is my screen visible? Hey, kindly add my screen, like you have to give access. Yeah. So let's see hack क्या है इस पे. Like you said, 0 out of 4 because we haven't done anything yet. So it'll be zero as of now. Like as we progress, it'll be 1, 2, 3, 4, etc. Follow pin badges are optional. You'll get awarded a few. Like I have 3 right now. You'll get more. You can work on it. There's pull merge request. We'll see what's it.
Let's just share and see a hack क्या the about section. Hacktoberfest, DigitalOcean का initiative है to ensure everyone to contribute to open source throughout October. And yeah, also it's the ninth time they are organizing Hacktoberfest. Like thousands of people, there are 160 plus million. Uh, what do I say? PI requests requested in last year. So let's see how far we can pull it this time now. And here's the guidelines for 2022. There's low or non-code contributors. So I tell you, there are three types of contributions you can do: coding, low coding, and non-coding. So non-coding में आपको reward नहीं मिल रहा है. That's what I'm doing. I'm not getting reward for hosting this session. I just want to do it कि like the way I faced some issues, आपको ना face करना पड़े and you are आपको मिल जाए सही से, like everything goes smoothly. Also, like even after the session, if you guys have any doubt, just let me know on Twitter or LinkedIn profiles. They'll be visible to you right now. I request you to put my social media handles on chat so guys can just, in case they need it, they can keep it. Yeah. Yeah, ma'am. So I'm there doing are it. low code, there's coding, there's non-code. Non-code is like, writing blogs about it, creating awareness among people about it. That's fine. We are just going to skip it because usme koi rewards nahi. You are just doing it voluntarily. There's low code, there's high code, like not high code, there's coding. So coding may, like you said, front end projects honge, there'll be AI ML project, whatever you know. Even if you know C language, there must be some projects based on C or C++. You go, you edit on those if you find any scope of improvement or something. That's fine. Then there's low code. Low code is okay. How many of you know about what documentation is? Documentation क्या होता है in technical language? As you can put your answers in the comments. Yeah. Also the non-tech guys don't freak out. सब बताऊंगी ये terms पर मत जाना, सुनने में अजीब लगता है बहुत easy चीज. Yeah, great. So the thing is, ये जो documentation part होता है, like suppose you have created a project, and like we all students are famous for it, we take variables as A, B, C, M, N. So हमें समझ में आ रहा है A, B, C variable है and M and N are the arrays and stuff. But just imagine you have to submit it to your teacher. Do you expect him to already know कि A, B, C, M, N है क्या? So firstly, though, you should not use variable names like these. They should be meaningful. Like take like integer number one, number two, number three, and stuff. But also, even after that, you do not expect your boss or your clients to go through it all and understand. They need to figure out that integer one kya and two kya. So what you do is after every new thing, you just add a comment like, "Hey, you have used ABC for code one, code two, number one, number two, respectively, etc." So this comment parts where you tell people that अगर कोई stranger भी आपका code देखे तो उसको समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पर. So that is what low code is. That is what documentation is. Here is a question. In open source, can we improve the firewall and UI of the software? Okay, so it in open source definitely we can. UI to aram say, and there are many startups and you can do it. But if we are talking specific about Hacktoberfest, so it depends completely on the organization and the companies and maintainers. We'll have a look into it right now. There's the advisory council. Let's just ignore. Yeah. Okay. So itna tak is fine. Let's just move to our presentation now. So what should be the eligibility? So the basic eligibility is you should have a GitHub account. वो आपका हो गया, मैंने करा दिया starting में.
register for Hacktober eligibility process. Doesn't matters आप किस background से हो, if you're a student or a working professional, anything doesn't matters at all. And you all set to go. Just do the 4 tasks, and you will get the t-shirt delivered to you within a month or so. So winners will with 4 valid merge pull requests will get a t-shirt and exclusive stickers and t-shirts to flaunt. There'll be some digital cute stickers by Holopin too, as you guys already saw. Like सबको gift mail आ गया होगा एक नया Holo what do I say Holopin का. And also more than t-shirt wala thing, what you get is that even if it's your first PR, you are learning things, right? Like एक college में हमें पढ़ाया जाता है, but they don't teach us how to do the thing like me. exactly. Yeah. So eventually you will learn कि what are you doing, like हो कैसे रहा है, because just imagine ना, here's this PPT. If I just put it on open source and you just feel कि यहाँ पे कुछ alignment errors है, like ये जो rules winners perks ये थोड़े आगे निकले, when you want to just balance it out. And just suppose the event, like we had 500 registrations, so kudos to you guys because you guys are so enthusiastic. So अगर आप कुछ चेंज करते हो एंड हमें लगता है कि हाँ लेजिट है, एंड आई जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड ये पूरा अलाइन हो जाता है, सो यू नो ना आपके काम से मेन प्रोजेक्ट पे क्या फर्क पड़ा. सो डजंट मैटर्स इफ इट्स योर फर्स्ट और 10th वन, यू विल स्टिल लर्न मेनी थिंग्स. Now there's repository. So repository is nothing but जो GitHub पर projects होते हैं, जो उनके folders होते हैं, we call them repositories. And by pull request, like pull request करना तो है, but कहाँ पे करना है? So those are the repositories वहाँ पे करना है. Also, we'll just say it right now. Everyone open your GitHub accounts. I have a spare GitHub account and I need you guys to open this link. Hey, I'm sharing it in the comment section. Just put it on out for the public. Okay, ma'am. I am sharing a demo GitHub repository from my spare account. I need you guys to open that. Here it is in the comments, guys. You can access this from the comments. Yeah. It's in comment section, guys. अब यहाँ से हैंड्स ऑन शुरू हो रहा, बोलना बंद हो गया, आप काम करेंगे. छोटा सा होगा and you won't even, आपको पता भी नहीं चलेगा when you are eligible for swags. Like you'll be like, अच्छा बस इतना ही करना था ऐसा. Don't go with the tough Ma'am, things. Priya Kamboj is asking how to process. What do you mean by process? Okay, just first open this link on Chrome on your mobile phone or PC. PC I'll say is the preferred mode. So सबने लिंक ओपन कर लिया. अब आपके सामने GitHub का ये repository. I'll share my screen. Hey, accept my proposal for screen share. Yeah, ma'am, here it is. So here's the repository. सबका ये open हुआ? Let me know in the comments. Guys, यहाँ पे मैं फोन में comments भी check कर comments रही में हूँ बीच बता बीच दो में, so let me know. जल्दी से कि आपका ये ओपन हुआ या नहीं. Yeah, perfect. So ये जो है ना, ये है repository. Just I need you all to search यहाँ पर Hacktoberfest. Hacktoberfest all GitHub. यहाँ पे अगर in this user करके वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं. All GitHub पे Hacktoberfest आपको search करना है. Here is a question: do we need to add names in a README file? अरे वो मैं बताऊंगी, अभी कर लिया जाएगा. Right now, just let's focus here. We have to add our names eventually. It's not compulsory. ये मैं करवा रही just to make you learn कि करना क्या है हमें PRs में. So we'll go there. Firstly, I need you guys to just search Hacktoberfest. Now we can see as Hacktoberfest इतने सारे repository है.
अब दोज ऑफ यू वर फीलिंग कि इतना लाइक मेरे को क्यों एक्सेप्ट करेंगे मेरे वो लोग, लाइक I'm such a newbie, like why will they even feel comfortable with accepting my pull request? But yeah, just imagine there are 1 lakh repositories available, and in a single project there are so many permutations, so many combinations of alterations possible. Then just wonder आपके पास कितने सारे resources हैं. So Hacktoberfest, if you search, then go to topics. There's Hacktoberfest 2021 accepted. So I need you guys to look specifically for the tag Hacktoberfest, Hacktoberfest 2022, Hacktober accepted, etc. The main one is Hacktoberfest, of course, because only if you contribute to these repositories in your tag lage हुए हैं, then only you're eligible for the swags. Like if we see यहाँ पे सब जगह आप देखो Hacktoberfest tag लगा हुआ है. Only these projects are eligible to एक्सेप्ट पीआरस फॉर हैक्टोबरफेस्ट. अगर आप जिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो वहां पे अगर हैक्टोबरफेस्ट का टैग नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से बट दैट वोंट बी counted at all as your PR, because if you want to reach that 4 pull requests, you have to do it. And like for new users like us, like we need to look for easy to use tags, good first issue tags. like me. फर्स्ट या बिकॉज आप स्ट्रेट अवे नहीं जाओगे ना कोई बड़ा सा या मिलकर कोड में आप उनका डेटा सेट ऑल्टर करने. यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल. सो गुड फर्स्ट इशू इज द परफेक्ट टैग फॉर दैट. Easy to use, first contribution, beginner friendly. Just search for these because these are the one you should work on firstly, because एक दो बार कर लो and then you are good to go. These are the repositories. Also, अच्छा, I'll talk about it later. Yeah. So I'll move to the slides now. आप लोग ये स्क्रीन अपना व्हाट डू आई से GitHub अभी बंद मत करना. विल मूव टू इट बैक राइट नाउ. अभी और थोड़ा देख लेते हैं, थोड़े बहुत कुछ रूल्स है जो भी आपने कीप इन माइंड. कैन यू एक्सेप्ट Ma'am, माय if पीपीटी प्लीज? yeah, yeah. Ma'am, if I'm not wrong, this Hacktoberfest is a very big scale event. Yeah, it is a big scale event. There are millions of repositories available, and जैसे as मैंने per अभी last year रिपोजिटरी statistics. में देखा 1 lakh repositories are there. एंड जस्ट इमेजिन दोज आर जस्ट रिपोजिटरीज. उनको मेंटेन करने वाले Yeah, कितने, उनको कंट्रीब्यूट करने वाले कितने होंगे? बिकॉज इवन अ रिपोजिटरी हैज मल्टीपल फाइल्स इन देम. सो बहुत बड़ा इवेंट होता है. आई एम सैड टू से बट पीपल डू नॉट इवन नो व्हाट हैक्टोबरफेस्ट इज. बट ये इतना हाई स्केल इवेंट होता है, बाहर इसका इतना इंपॉर्टेंस है, बट वी पीपल जस्ट डोंट नो. इसलिए मैं ये सब करा रही ताकि एटलीस्ट आइडिया हो सबको. Bale if you don't get swags, but you need to have an idea because they are putting efforts. We need to do our part. Yeah. Moving forward, how to fork, I'll teach you that right now in hands-on session. Anyone can contribute. We talked about this. There's writing, design, and stuff. You can either do it, technical documentation or testing or anything. Yeah, so here are the rules. Firstly, try to make valuable contributions. You are not supposed to put a comment that HTML stands for hypertext markup language, or like you are not supposed to correct any grammatical error and consider it as a PR, because if you do, companies might accept that, yeah, you are trying, you are getting started. But ethically just saying you should not be doing that, because chances are that that PR will be marked invalid by the maintainers. Like अगर सपोज यहाँ पे मेरा एक रिपोजिटरी है, ओके, एंड आप क्या करते हो, आप प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर देते हो. सो है तो वो भी सही कि एडिटिंग प्रोजेक्ट, but that doesn't mean na that this is a valid PR. So if the maintainer is kind enough or just wants you to learn, if you're doing for learning purpose, it's really good. Like you can do it. Like अगर आपको डर लग रहा कि how to get started, for once you can do, but do not like just stick to it. Make some coding or some really valuable non-coding impressions. Can we have the yeah? Then, and our goal is to merge 4 pull requests. So here's the catch. Everyone make sure that at least you guys apply for or pull minimum 8 PRs, minimum 8 pull requests, because chances are उसमें से आधी आपकी invalid consider कर दी जाएंगी.
ये आपसे कुछ साल पहले तक नहीं था, बट क्योंकि इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा, सो दे हैव टू रेज द बार, बिकॉज सबको टी शर्ट एंड सब, सो दे हैव टू रेज द बार, एंड उन्होंने थोड़ा टफ कर दिया है। सो मेक श्योर दैट आप मिनिमम 8-9 पुल रिक्वेस्ट दे दो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका इनवैलिड हो भी रहा है तो एटलीस्ट यू हैव 4 टू सिक्योर योर स्पॉट, राइट? So yeah, that was the most important rule of today's session. And rest we know it's fine. Just पूरे October month में make sure that you at least contribute to 4 repositories, and you're good to go. By the mid-November, you will receive form on your email by DigitalOcean to just fill it, so they can ship your swags. Also, I'll be sharing a list of good first issues, and some user-friendly repositories, some beginner-friendly repositories for you. So उस पे कंट्रीब्यूट करना कंपैरेटिवली इजी होगा, इनका सिलेक्शन जो लेवल होगा वो उतना हाई नहीं होगा, सो chances are your PRs will get accepted. But for that, you will have to keep a check on my Twitter handle, because I'll tweet the links once in a while. आप फिर से मेरी ट्विटर आईडी शेयर कर दो, बिकॉज I'll keep tweeting the easy repositories there, so you can just, even if you are not sure कि search करूँगी तो easy मिलेगा कि नहीं, just keep a check on this, and I'll do share some good repositories. You can simply contribute to that to reach your 4 PRs वाला level. Thank you. So now let's move to the hands-on part. अभी हम लोग live एक PR merge करना सीखेंगे. Let's switch back to our GitHub page. You can just remove this PPT while it's okay, and give permission to my screen. Indiki sabko. Yeah, ma'am, it is visible. Is the this page visible? Guys, is this page available? Please comment. Yeah, perfect. So I need you guys to, जो मैंने link दिया था, can we have that link again, please? Yeah, ma'am, here it is. आपका जो link मैंने दिया था, and screen पर भी visible होगा अभी. That show मिली 1818/Hacktoberfest demo. So like I said, ये है हमारा main project. अब इवन दो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट बेसिकली नेम एंड ईमेल आईडी है, और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बट व्हाट वी नीड, जस्ट इमेजिन, जस्ट लेट इट, लाइक वी आर मैथ स्टूडेंट, सो जस्ट लेट इट दैट ये एक कोई बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का, उनका प्रोडक्ट का मेन सोर्स कोड है, बिकॉज ओपन सोर्स Here में it सब is, मिल ma'am. जाता है. या सो ओपन सोर्स में सब मिल जाता है. सो जस्ट लेट्स इमेजिन कि ये एक बड़े से वेबसाइट का हम लोग सोर्स कोड देख रहे हैं. नाउ अगर मेरे को इसमें कुछ एडिट करना हुआ, कुछ अगर मुझे लगा कि ये तो कैपिटल में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे तो मेरा भी नाम होना चाहिए फॉर इनिशियली इस वाले के लिए, सो व्हाट वी विल डू इज, अभी मत करना, मैं बता रही हूँ फिर करना. Okay, ma'am. Yeah. So can I have a minute, please? Just a second. Just a second. Till then, I need you guys to fork this project. यहाँ पर fork दिख रहा, click on this. Can you mute me for a second, please? Yeah, ma'am. Guys, you can access this through the given link. So sorry, guys. Yeah. So सबने fork कर लिया. अब fork तो कर लिया, होता क्या है बताओ? Anyone knows what forking is? Here, just click on this and Any it one will of you fork. know? क्लिक ऑन दिस, ये स्क्रीन आएगा. ओके, फोर्किंग क्या होता है कि अब आप उनके मेन वेबसाइट पर तो यू कैन नॉट डू एनी चेंज, राइट? सो आप क्या करोगे, फर्स्टली यू विल गेट दैट प्रोजेक्ट कोड्स कॉपी ऑन योर लोकल डिवाइस, ताकि वो आप उस पर
एडिट कर सकते हो. लाइक टीचर ने बोर्ड पर कुछ नोट्स दिखाए, यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड डू एनी चेंजेस ऑन द नोट्स. यू फर्स्ट copy it down on your mobile phone and वहां पे you can do any changes. So just ये screen आ जाएगा. Yeah, exactly. Can we give a shout out to Aryan Panchal, please? Making a copy of repository without affecting it originally. So when we do it, यहाँ पे आएगा आप कहाँ पे करना चाहते हो. So I need you guys to select आपका own जो whatever your ID is, because I have done it already, so I do not have access to it. Just make sure यहाँ पे आपका खुद का user ID होना चाहिए. Take any name you like. यहाँ पे just it needs to be available, any name you wish, and then just copy, click on create fork. How many of you guys forked it successfully? Just give me a done. Like type in spam in comments done. Ma'am, here is a question. To get access to whole code in our repository for VCS. No permission, nothing. That's free. That's what open source is, na? Like you are free to copy, modify, edit it accordingly. Like they are not going to question you or sue you. आपको जो अच्छा लग रहा है आप चुपचाप अपने वहाँ पे डाल लो लोकल डिवाइस में एंड डू वॉट एवर यू विश. यू कैन इवन लाइक आप फेसबुक का कोड उनसे एक पर्टिकुलर पार्ट का लेकर उसको इंस्टाग्राम लेआउट में बना दो. दे वोंट से यू अ थिंग अनलेस यू जस्ट ट्राई टू रिक्वेस्ट देम कि यार मैंने आपका तो फेसबुक का तो इंस्टाग्राम बना दिया, लाइक मर्ज कर दो उसे. They'll probably kick you out after that, but उससे पहले they don't care. Done. Very good. Great work, guys. Ankit, Yeah. Thakur done. Karthik, Now, Sarah, what you Folk need done. to do? Sorry. Nothing, ma'am. I'm just shouting out the names who have done these things. Forking. अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है. दिस ब्रांच अभी किसी के बिहाइंड नहीं है. जस्ट मेक श्योर अभी जो बोलूँ मैं आप सब ध्यान से सुनो, ठीक है. Ma'am, here is a सो अभी question. फॉर्क तो हो गया एंड अभी ये तो यहाँ पे एक रीडमी फाइल है, ये जस्ट टेक्स्ट फाइल है. बट आप जब कोड करोगे वहां पे प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा वो. सो आपको उसको इंपोर्ट करनी है. थोड़ा सा रूल होता है, इसको कॉपी करना होता है. दैट्स अ 1 minute वीडियो यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब कहीं पर भी. जस्ट सर्च हाउ टू फॉर्क प्रोजेक्ट करके एंड यू विल गेट इट. एंड मैं मतलब दिखा भी दूंगी बट लाइक ओके चलो देख लेते हैं. यू हैव टू डू इट बाय द फुल प्रोसेस. ये आपका कमांड लाइन से होता है, बट जस्ट टू मेक इट क्विक I'll Great show you. work, Vanshika. इसको देखकर डरना मत. दैट्स ओके, यू डू नॉट नीड टू डू इट राइट नाउ. ये क्लोन हो रहा मतलब ये उस वेबसाइट से मेरे लोकल डिवाइस पे आ रहा एंड ये पूरा का पूरा 100% कोड में. अब हम लोग देखते हैं अपने लोकल डिवाइस में जा करके. ये मेरा डेटा हार्ड डिस्क डी है एंड हियर वी हैव Ma'am, Priyal Sharma is saying, Hacktoberfest. I can't understand. Please repeat. क्या कहाँ पे नहीं समझ में आया आपको? Priyal just mentioned the part here. Yeah. कहाँ पे समझ When नहीं आया? clicked on fork, it brought back to same page. Now it's yes, that's good. Username / Hacktoberfest demo होना चाहिए because we are just making a copy. So पता रहना चाहिए किसका कॉपी है. So अगर मैं अपने कॉपी में नोट कर रही हूँ तो कॉपी में नाम होगा राइट कि शोमिली का कॉपी है एंड ये वहाँ पे नोट कर रही है. वैसे ही आपका जो कॉपी होगा लाइक सपोज चैप्टर 1 रिटन ऑन बोर्ड. अब सब अपने अपने कॉपी में उसको नोट करेंगे बट हाउ इज सपोज डिस्टिंग्विश कि किसके कॉपी में है ये. सो आपका नेम तो होगा ना. सो दैट्स यूजर नेम / जैसे हमारे फोल्डर्स में होता है कि हाँ ये इसका कॉपी है इस पर्टिकुलर कोड का. लाइक पर्सन ए का ये कॉपी है, पर्सन बी का ये कॉपी है, पर्सन सी का ये. आप अपने अपने में इंडिविजुअली कुछ भी करो. दैट्स ओके. इफ यू फाइंड एनीथिंग गुड ये भी अपना सजेशन उनको देगा, ये भी अपना सजेशन उनको देगा एंड एट द एंड एक मेन मिलेगा हमें कि हाँ इट्स ओके टू मर्ज. Gurveet Anand is asking, please repeat after forking. After forking, okay. Fork, once you click on fork and then ऐसा open होगा.
यहाँ पर आना चाहिए आपका जो यूजर नेम है वो, ये आपका ऐसे नहीं शो करेगा। अगर आप कर लियो तो इट्स वेल एंड गुड, जस्ट वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे यू कैन पिक एनी नेम, एनीथिंग यू विश, लाइक AR क्लब मे बी, इट्स ओके। यहाँ पे ग्रीन दिख गया मतलब इट्स ओके, आई कैन यूज दिस। देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट फोल्ड एंड क्लिक ऑन क्रिएट फोल्ड। एंड जब आप फोल्ड कर लोगे, आई एम जस्ट शोइंग यू, आप तो फोर्क करो। व्हेन यू आर डन विथ फोर्किंग, आपको एक यहाँ पर ये आइकन दिख रहा होगा, ये फोर्क का जो साइन होता है ना, ये वाला आपको यहाँ पे मेरे को शो मिली स्लैश अक्टूबरफेस्ट डेमो दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर इसके जगह पर वो आइकन दिख रहा होगा। किस किस को दिख रहा है यहाँ पर एक ये सेम जो आइकन बना हुआ है, वो यहाँ पर भी बना हुआ है। गाइस प्लीज कमेंट किस किस को सेम आइकन दिख रहा है। ओके ग्रेट। सो ऑल्सो लाइक हमने जो काम अभी करने वाले हैं हम लोग, इससे पहले इतने सारे लोगों ने वो काम किया है, लाइक इन माय प्रीवियस सेशन। सो ये सब एकदम न्यूबीज से सबने किया, एंड यू नो दिस सक्सीडेड बिकॉज दिख रहा है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी, आपका भी हो जाएगा। जस्ट जैसा बोल रही हो वैसा कर लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ वेरी इजी गाइस, बस आप मैम को फॉलो करो जैसे मैम बोल रहे हैं। सो यू हैव टू क्लिक ऑन फोर्क, देन आप उसको फोर्क कर लेना आपने। ये सिंबल सबको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर आपका यूजर नेम होगा स्लैश हैक्टोबरफेस्ट डेमो होगा। ये हो गया जो मेन कोड था, उससे मैंने अपने कॉपी में नोट कर लिया सेम टू सेम उस कोड को। अब व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज, यहाँ पे आप नीचे आओ। जैसे मैंने बोला कि अगर कोड करना को प्रॉपर, लाइक VS कोड वगैरह में सब कोड करते हो ना, तो उसके लिए पूरा कोड आप ऐसा कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे ना एक एक फाइल खोल करके। तो आप यहाँ कोड पर जाओगे, इसको कॉपी करके 1 मिनट का बस होता है, यूट्यूब का वीडियो आप देख लोगे कहीं पर, एंड वो पूरा आपके डेटा आपका वो लोकल डिवाइस में आ जाएगा। तो जस्ट फॉर सैम्पल मैंने ये कर रखा था अभी, एंड ये मैं अपना लोकल डिवाइस खोली, यहाँ पर हैक्टोबरफेस्ट डेमो से बना हुआ एक फोल्डर, बिकॉज आई फोक्ड इट देयर। आई क्लिक इट हियर, एंड एग्जैक्ट इसमें जो तीनों फाइल है, अभिषेक तिवारी बाय द वे इज द विनर ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशॉप्स, उसका नेम है। यहाँ पे भी देखो सेम फाइल्स है। सो यहाँ पर 3 है तो इट्स फाइन, बट जस्ट इमेजिन कोई कंपनी है, उनका प्रोजेक्ट है, देयर इज लाइक 20 or 30 such files. You are not going to copy paste it one by one, right? So in that case, you simply just go to this green button, and 1 मिनट का स्टेप होता है, बस उसको अपने लोकल डिवाइस में सेव कर लेने का। वी आर स्किपिंग दैट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई कोड का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट, एंड ये आप एडिट करने को ओपन हो गया। So I need your guys Instagram, like first type, because shout out देना है ना हमें। So बस firstly write your name there, space। आपको अगर ट्विटर पर या आपका जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है, सपोज हियर्स माय ट्विटर वन, आई विल जस्ट डू एंड ट्विटर, फॉर ट्विटर। ये मैं चाहती हूँ इस फाइल में हमेशा के लिए सेव हो जाए, and I needed to update it to main one। अब मैं ये स्टेप ध्यान से देखना, इस स्टेप पे लास्ट बार 60% लोगों ने गलत कर दिया था, इसलिए कोई जीत नहीं पाया वो वर्कशॉप, बट यू गाइस डोंट डू दैट। जैसे ही आपका नेम यहाँ पे ऐड हो जा रहा, आप नीचे आओ, एंड देन नेवर कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, बिकॉज एक ट्री है, ये आपका मेन जो प्रोजेक्ट वो है। आप यहाँ से कॉपी ले रहे हो, आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो, सबके यहाँ जो सब ब्रांचेस होते हैं, टहनियाँ, वो सब कॉपीड है। सो नाउ वंस यू आर डन विद द चेंज, you are not changing it directly to the main branch, you have to change it on your sub branch। So always just select the below option, create a new branch for this commit and start a pull request। यही तो करना है हमें अक्टूबरफेस्ट में, पुल रिक्वेस्ट ही तो बनाने हैं। So
नेवर एवर कम डायरेक्टली टू मेन ब्रांच, लाइक हड़बड़ी में आप लोग कर सकते हो, नेवर डू दैट, बिकॉज उसके बाद पीआर क्रिएट ही नहीं होगा तो मर्ज कहाँ से होगा। एंड यहाँ पे आपको एक रैंडम सा नेम, लाइक आपका यूजर नेम पैच वन या कुछ भी, आप यू कैन रीनेम इट, दैट्स फाइन। आपको आपके ब्रांच का क्या नेम रखना है, लेट्स से वर्कशॉप, मेरे को अपने ब्रांच का नाम रखना है वर्कशॉप, इट्स फाइन। ऑल्सो आप अपना नेम डाल देना, क्योंकि फिर अब सबको ही वर्कशॉप करेंगे तो वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाएगा, वर्कशॉप शो मी। वैसे आप अपना अपना नेम डाल देना यहाँ पर। एंड नाउ मैंने कमिट करूंगी, सो बताने भी पड़ेगा ना मैंने क्या चेंज किया, नहीं तो उन्हीं का से पता रहेगा कंपनी वालों को मैंने किया क्या है। सो आई राइट एडेड माई नेम, हो गया। क्लिक ऑन, यहाँ तक सबको दिख रहा है, समझ में आ गया। Never ever commit to directly to main branch. Always make sure to create a new branch. गाइस प्लीज कमेंट, यहाँ तक आपको क्लियर है सब? Option for work, for personal use, for teach. I'm so sorry, Priyal, I didn't got you. You can even type in Hindi, that's fine. Like, at least I should understand है क्या वो। इतना तक इन्होंने कर लिया, ये ब्रांच नेम तक इनको सब मैं फिर से बता दे रही। यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट, ये पेज ओपन हो जाएगा, वो आप एडिट कर सकते हो रीडमी फाइल। यहाँ पर आई नीड योर नेम एंड योर सोशल मीडिया अकाउंट, ताकि आई कैन गिव यू अ शाउट आउट देयर। वंस यू आर डन, नीचे आइए, यहाँ पर बताइए आपने किया क्या है। लाइक आई एडेड माई नेम, देन नेवर एवर डायरेक्टली कमिट टू मेन ब्रांच। ये मैं बहुत बार बता रही थी कि लास्ट बार जस्ट फ्यू डेज बैक ऑलमोस्ट 70 बच्चों ने ये गलती कर दिया था, बट like even after I warned them several times, because ये one time होता है, you cannot change this later. So always create a new branch and start pull request. खुशी यहाँ पे गोवर्धन, आप ग्रेट वर्क गाइस। work focus footage, um, क्या सिलेक्ट करोगे, आप टू सिलेक्ट क्रिएट अ न्यू ब्रांच, देन आपको नेम दिखेगा, योर यूजर नेम डैश पैच वन और समथिंग, यू कैन रीनेम इट एंड क्लिक ऑन प्रपोज चेंजेस। वंस यू आर डन, अब वो लोग चेक करेंगे ये पीआर वैलिड है कि नहीं। पुल रिक्वेस्ट यही है, पूरे हैकटोबरफेस्ट में हमें यही काम करना है। आप नीचे आओगे, यहाँ देखोगे आपने चेंज क्या किया, लाइक पहले फाइल में बस यही तीनों थे, मैंने क्या किया, मैंने ये चेंज किया, सो मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे व्हाट डिड आई चेंज एंड शोइंग वन चेंज फाइल। यहाँ पे आप जितना, अगर ये कोड होता 1000 लाइन्स का, आपको ऐसा ग्रीन सा दिखता आपने चेंज कहाँ पर किया, सो यू नो व्हाट यू आर डूइंग। नाउ यहाँ जो है ये बेस मेन है, जो मेरा मेन फाइल था वो बेस मेन था, वहां पे मुझे अपना रिक्वेस्ट भेजना है कि सर मैंने कुछ चेंज किया अपने नोट्स में, आप देख लो सही है कि नहीं। एंड कंपेयर किससे करना है, जो ब्रांच है उस ब्रांच से, नेवर एवर डिफॉल्ट से। मैं मेन पे करूंगी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, isn't anything to compare, always switch to your जो ब्रांच है वो। और यहाँ पे दिख रहा है एबल टू मर्ज, लाइक ठीक है ये मर्ज हो जाएगा। नाउ आई जस्ट क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यही करना है। जिनको भी दिक्कत वहाँ 0/4 दिख रहा था, वहाँ पे यू हैव टू मर्ज 4 पुल रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर आई जस्ट सॉ लाइक ऑप्टेड फॉर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना, व्हाई शुड दे इंक्लूड माई चेंजेस। सो मैं बताऊंगी उनको कि हे I, आप यहाँ पे you can put your personalized messages here. I would love to see that. I just added my name to your repo. Fine. Now I know what did you do. You can keep it professional, but for me it's fine. You can just even troll me here. It's okay. So yeah, then just create pull request and you're done. इतना ही करना था, हो गया आपका पुल रिक्वेस्ट। ऐसे आपको 4 करना है एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर हैकटोबरफेस्ट टी शर्ट। बट लाइक आई सेड, डोंट स्टिक टू 4 बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो सारे कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारे इनवैलिड कंसिडर कर दिए जाते हैं। मेंटेन अ सेफर साइड, एम फॉर 8 to 9 PRs एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस मच, ओके। एंड यहाँ पर एज अ मेंटेनर आई विल सिंपली मर्ज दिस पुल रिक्वेस्ट, बस। एंड नाउ व्हाट विल सी, यहाँ पे हो गया पुल रिक्वेस्ट मर्ज एंड क्लोज। अब मैं जाऊंगी अपने ओरिजिनल, देखो ये फोक्ड है, फोक्ड फ्रॉम मतलब यहाँ से फोल्ड किया है। अब आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल प्रोजेक्ट।
And if I refresh this, here are the pull requests and यहाँ पे दिख रहा है added my name and social media handles. ये पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है इसमें. अब इसके जो चेंजेस होंगे ये इस कोड में भी रिफ्लेक्ट होंगे. ओके, सो आई नीड यू गाइस टू डू दिस मच, लाइक जल्दी से करो इतना. मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए सबके पुल रिक्वेस्ट. एंड गाइस ये बेसिकली यहाँ पे बहुत ईजी कोड है, आप मैम को फॉलो करोगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. यहाँ पे जैसे आप लोग करोगे ना, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में को शो होंगे किसने क्या क्या किया. एंड नेवर एवर डू दैट फॉर मेन. यू कैन सी ये सारे लोगों ने किया 2 minutes ago, 3 minutes ago. आई नीड यू ऑल टू. ओके, ये सब मैम अपने अपने आफ्टर पीआरस डिस्कशन आई डाल विल के. आल्सो डू इट. मैं या आपको या अपडेट कर. या श्योर. You guys can also create a completely new file and add your name. That's fine. Like do whatever you wish. The repository of up here, and you are free to make any changes. Garvit Anand is asking we have to click on confirm merge. Yeah, you right now क्योंकि ये मैं अभी खुद मेंटेन नहीं करी हूँ क्लिक ऑन कंफर्म मर्ज, बट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा करने. वहाँ पे दे हैव टू डू इट. यहाँ पे आप कंफर्म मर्ज कर दो एंड देन रिफ्रेश द पेज एंड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अपना डेटा दिखेगा. करो, मुझे नेम देखना है यहाँ पे सबका. गाइस जल्दी से सबमिट कर दो. You can do any sort of change जो भी आपको पसंद है. You can even erase those names and put something new. Just make sure to merge changes because ये मैं अभी merge नहीं करी, मैं moderator नहीं हूँ. आप खुद करो. So आपको पता चले कि मेंटेनर अपने साइट पे भी क्या कर रहा है. ऐसा ना हो कि यू लाइक मैंने तो कर दिया, उधर क्या काम चलेगा. You need to know both the sides. आफ्टर डूइंग दिस जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स, सो जिससे हम आपको शाउट आउट भी दे सकें. Yeah. So Garvit Anand, great work. Garvit Anand is saying done. And wait, so can we have the names? Actually मेरे पास emails आ जाएंगे किन्होंने किन्होंने किया है. Garvit Anand is saying done, ma'am. Great. और बाकी सब कहाँ पे हैं? So Yes, we have to we click have on merge pull request right now. As of now, we have to click on merge pull request. great work, Who's Sneha. Aryan 26? Who's Aryan 26? Guys, answer who is Aryan 26. Aryan का pull request merge हो चुका है. He's the first one right now. So yeah, can we give a shout out to Aryan Panchal? Yeah, here he is, ma'am. Great work, Aryan. Okay, so guys, देखो यहाँ पर आर्यन का यहाँ पे ट्विटर हैंडल दिख रहा, इंस्टा आईडी दिख रहा. So we'll later give him a shout out there too. जिनको भी अपना नाम चाहिए, just do that quick. मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट देख रही हूँ सबके. You know what to do. Let us know in the comments, guys. Karthik Batra is saying done, ma'am. Okay, I'll just check it once. Huh? Give me a second. फिर से लोग गलती करे, मेन में मर्ज करे. डोंट डू दैट. मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दे रही हूँ, वहाँ पे कोई नहीं करेगा. Garvit Anand is saying, but why isn't my visible? हाँ होगा. I have to merge ना, because जैसे मैं यहाँ पे सबको मर्ज करी एक एक करके, तभी वहाँ पे Garvit, just रिफ्लेक्ट wait होगा. for 2 seconds. Ma'am कर रहे हैं. लाइक यहाँ पे देयर लाइक 61 folks, so एक एक करके मर्ज करने में टाइम लग रहा होगा. जस्ट वेट. एंड ये मैंने कर दिया अभी. there's Thakur Yashika, there's Aryan Panchal, there's Ankit Yadav. Next I'll be Garvit doing. Anand is saying, here it shows pull request merged and closed.
या आई एम जस्ट डूइंग. आप अपना स्टेप्स कर लो. नेक्स्ट इज प्रिंस. लाइक नेक्स्ट मैं प्रिंस का करने वाली हूँ. सो Then we'll answer you in Q&A part. यू नो दी स्टेप्स, जस्ट डू इट. एंड ये प्रिंस का मर्ज हो गया है. Sambhav Mishra is saying, "Ma'am, is my name shows? It is visible, ma'am." या मैं करी इनको दिखेगा ना. ये सेकंड पर्सन प्रिंस का मर्ज हो गया. यहाँ पे मेरे को यहाँ दिख रहे हैं आपको 5 लिखे. लाइक मेरे पास फिलहाल 5 रिक्वेस्ट है. मैंने 9 का कर दिया. तो ऐसे मैं एक एक का कर दी. नेक्स्ट आई हैव विथ मी शेख अब्दुल कबीर. ये कौन है शेख अब्दुल? Yeah, ma'am. Here it is, Abdul Kabir. Next, मेरा है PR. आ गया भाई आपका भी रिक्वेस्ट. ओके ओके. सब डालो भाई, मेरे को सबका चाहिए यहाँ पर. लेट्स सी कितने लोगों ने काम किया एक्चुअली. Do it, guys. मजा आएगा. So यही much करना है पूरा हैकटोबर फेस्ट में. excitement. अभी कर लो प्रैक्टिस. या अब्दुल आपका जस्ट होने वाला है. अब्दुल का भी हो गया. जिन जिन का हो रहा, जस्ट रिफ्रेश दैट ओरिजिनल कोड. आपको वहां पर आपका नाम एंड सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे एक एक करके. बाकी सब कहाँ है guys? जल्दी जल्दी कर दो. Good work, Vanshika. एंड Vanshika is यहाँ on the पर same आपको call, अपना ma'am. आईडी दिख रहा होगा किन किन ने कंट्रीब्यूट किया है. सो आपको यहाँ पे अपना आईडी नेम फीचर कराना है. ये गिटहब अपनी तरफ Ma'am, से करती है. यस. Garvit Anand is saying, पर मेरा शो नहीं हो रहा शायद. गर्वित आनंद. I don't see anyone named Garvit Anand here. नहीं Garvit Anand, I request you to do these steps again please because मेरे तक नहीं पहुंचा है. Maybe you are missing something. Be Yeah, rank. can we just feature Abdul's latest comment please? Yeah, ma'am. Yeah. He says learn something Thanks, new. bro. No, not that. Yeah, जो है ना बढ़िया था भाई वाला. Just feature that comment. Yeah, ma'am. It is on the screen. Okay, okay. Actually, मेरा थोड़ा delayed चल रहा. So, this is what I want to see every one of you typing. Next is Shalini Yadav. Vanshika is saying, done, ma'am. Great work, Vanshika. Yeah. आप अपने तरफ से pull merge pull request तक कर दो. And I'm doing my part here. ये शालिनी यादव का भी हो गया इसमें merge. Yeah, यश सिंह ब्रो मैम कर रहे हैं एक एक करके. आपका भी आएगा. डोंट वरी अबाउट इट. Yeah, yeah. But I need to find it here, right? अगर मेरे को यहीं पर नहीं दिखेगा तो मैं कैसे करूँगी? और merge होने के बाद ये purple हो जाता है just in case you know. जैसे ये देयर अभी इज अ 30 कमेंट. seconds पहले ही शांभव मिश्रा ने किया था. Who's शांभव मिश्रा? शांभव मिश्रा को आप शांभव मिश्रा आपका जस्ट होने वाला है merge. Congratulations on your first PR. No, this repo is not Hacktober accepted. Actually, मेरे पास like I have my midsems from 10th of this month and so I won't be able to maintain because थोड़ा काम पड़ता है. Like ये जो मैं कर रही है मेंटेनर का ही काम है. And just imagine कितने सारे वहाँ पे requests आएंगे. सबको चेक करना and letting only the legit ones pass. थोड़ा hectic task है. So it's not a part of Hacktoberfest, but this is exactly what you need to do there. So yeah. Next, देखो यहाँ पर there's Shalini Yadav, there's Shambhav, there's Abdul, then there's संभव मिश्रा. Prince. ग्रेट वर्क ब्रो. Yeah. संभव is saying Next yes ma'am. is Keshav. Who's Keshav? You're next. Okay, do something funny like या कोई meme या कुछ डाल दो. Maybe नाम ही क्यों, मतलब नाम डालो, obviously page डाल दो and but do something funny ना. Engineer कैसे बनोगे नहीं मैम तो?
Abdul Kabir is saying इस बार टी-शर्ट लेकर ही जाऊंगा. Thanks to अरे AR एकदम. Club and Sound एंड Limited. व्हेन यू गाइस गेट द टी शर्ट काइंडली डू टैग मी एंड मेरे को अच्छा लगेगा देख कर ना. And Just wear also the to tag t-shirt AR and Club guys. Don't forget to tag AR Club. yeah, tag AR, tag me, and I would love your. Okay, like my name is pretty unique, so you can just stalk me pretty much everywhere. But still, I'll just ask like after this session, just post a completion post and there add all my social media handles because Yeah, bro. जिनको भी Thanks. doubt होगा they can contact me there. Yeah. So we Ma'am, have Garvit your click. Anand is saying how to do steps again. Pencil isn't available on screen. मैं बता रही हूँ. Actually, मेरे pull requests आ रहे हैं ना. I'll tell you, please wait तब तक like जो try करे उनका कर दूँ. ये केशव का merge हो गया. Congratulations. और लाओ भाई मेरे को मिल क्यों नहीं रहे. इतने कम से कम 50-60 लोग हैं ना. मेरे को 60 चाहिए कम से कम 40 तो दो. Bawonder, do we get a choice about which tree we want to be planted or something like that? Okay, yeah, you have a choice actually. वो उनके पास कुछ ऐसा कोटा से like Oh, may इसके I इतने know ऐसे. your actual name? My actual name is Shomili. Yes, that No, Shomili ma'am, Mukherjee. That not yeah. for yours. I'm asking No? it to Bawonder because he's Okay, mentioning Bhavender. Bawonder Yeah, in his. Yeah. I know So, his name. Prince, वही था ना. Joginder, Thara by Joginder. Maybe he is. no, ma'am, Prince. Okay. ये ठाकुर Ma'am, यशिका कौन है? Who's ठाकुर यशिका? here is one person I can't pronounce his name. मैंने सबसे पहले किया फनी ही किया था मैंने पर वो शो ही नहीं हो okay, रहा. Kirio Theo, there might be some error. I request you to please go to the through these steps again because I need your pull requests here. I want to see them here. Okay, I'll just show again. Just go to showmili1818/Hacktoberfest demo. Just go to showmili1818/Hacktoberfest demo. Fork this. यहाँ पे fork का icon है. Fork this and यार मेरा यहाँ पे बहुत सारा forks हो गया है so I cannot show you but when you click on this यहाँ पे आपका user name show हो रहा होगा / there'll be repository name. Then just click on नीचे create fork and after you create fork यहाँ पर like you will have a copy of the original code here. So यहाँ पर इस symbol की जगह will be this fork symbol to denote that Garvit आपका Anand, वो Joginder Supremacy. Wow. yeah. So it shows that it has been forked. I'll show you कैसे दिखेगा. यहाँ पे ये symbol होना चाहिए fork from the original repository. Forked कहाँ पर? So यहाँ पर. Now after you have forked that, देखो यहाँ पर ये back ही चल रहा है. So this is what happens कि आप जब अपने वाले पे करोगे ना तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको और जो मेन वाला है उसमें देखो 21 कमिट्स बिहाइंड. कमिट्स मतलब कितने चेंजेस हुए तो वहाँ पे 21 चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी मेन वाले पे. तो जो वो जो मेन फेसबुक का पेज है वहाँ पे 21 लोगों ने चेंज कर दिया और यहाँ पर मुझे बस अपना चेंज दिख रहा क्योंकि ये मेरा लोकल कॉपी है. मेरे कॉपी में मुझे अपना ही नोट्स दिखेगा बाकियों का नहीं. So I need here to click Great that work, Dia. pencil icon. Then Pushti put Goyal. anything funny, Good guys, work. please. Just your social media platform and put anything funny. मैं Amit डालती हूँ. Raj. Yeah, bro. You are understanding. It is good for us. Yeah. So I'm just doing जल्दी जल्दी करो. And I'll Amit put the Raj is topic replying to की you, ma'am. t-shirt चाहिए. And then I'll always create a new branch. Never ever just leave it to Good this. work, Kushi. Always create a new branch. And then एक name. You can edit this name या ये भी चलेगा and then propose changes. Once you propose changes, यहाँ पर आपको show हो रहा होगा able to merge, like it's okay. And आपको आपने यहाँ पे क्या change किया वो भी show होगा यहाँ पर green में highlighted. Click on create pull request.
and you can leave a comment, like you need to tell them ना कि आपने किया क्या काम है, so just tell them that hey I added something, ताकि कंपनी वाले को पता चले मैनेजर को कि आपने किया क्या है. Then click on create pull request, एंड यहाँ पे चेक हो रहा कि मर्ज हो सकता है कि नहीं, ये आपका ग्रीन आ गया, यू आर गुड टू गो, क्लिक ऑन मर्ज पुल रिक्वेस्ट एंड कंफर्म. ये हो गया यहाँ से कंफर्म. नाउ आई विल मूव टू माय ओरिजिनल रिपोजिटरी एंड यहाँ पर आई सी मी. ओके मी फर्स्ट. जय जय, हाँ अभी मिला ना, आप ऐसे करना था. व्हाट्स योर रियल नेम? किरियो थियो. Your real name Kirio Theo. या सो अब इनका भी आ गया. लेट्स चेक द मेन कोड. Great work, Khushi. प्रिंस का हो गया. Ma'am, Garvit is saying फिर से किया है, please check. ओके ओके आई एम चेकिंग. Great work, Jitin Dhiman. आप करते रहो, आई एम डूइंग इट, नो इश्यूज. हुई गुड. Okay, so I need some funny comments there now. Along with your social media platform, just put some funny comments there too. Because like टेंशन क्यों लेना है, ऐसे अच्छे से सीख जाते हैं ना, हंसते खेलते. मस्ती Okay, मस्ती में so सीख this जाते हैं. It's very easy, question guys. yeah. दिस क्वेश्चन इज फॉर दोस्त लाइक जिन्होंने किया. आपको पता चला आपका पीआर कब कैसे मर्ज हो गया, कुछ ऐसा आपको बहुत डरावना सा लगा, जैसे रिपोजिटरी भगवान जाने क्या होता होगा, फोर्ट भगवान जाने क्या होता होगा. Ma'am, Anushka Singh is saying, can you please check if my request has been accepted? वन सेकंड जस्ट चेक इट. या स्टूडेंट याशिका कौन है? यश स्टूडेंट याशिका. स्टूडेंट याशिका, I'll just Who pull is your student request Yashika? right now. Ma'am, Abdul Kabir is here again. Meme हाँ हाँ. upload किया है, new PR, please check. Okay, sure. Yeah, so I was asking कि जिन्होंने भी ये किया like Kirio Theo is Aditya Vijay. I So need your suspense, feedback. आपको लगा कि कुछ बहुत heavy चीज या कुछ scary चीज सिखा दिया and that you need to be scared कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया something. ma'am, suspense is broken here. Kirio Theo is Aditya Vijay. Okay, perfect. Yeah. We have another one by Zark maybe. मेंटेनर बनना भी मेहनत का काम है. या सो ये साठ का भी हो गया. या Great मैं work, देख रही, both of एक एक you. करके देख रही सबका. Who is नेक्स्ट Garvit वन Anand भी. is asking. आई नहीं मैम अभी भी. who's पूछा. या who's Jatin Dhiman? Yeah, ma'am. Here it is. Present with us. ओके, हमने कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी. वेरी गुड. तो जल्दी करो भाई, आप लोग भी डालो कुछ कुछ कमेंट्स. अपने कॉलेज का बिचिंग कर लो सब कि थर्ड टायर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता. मैं भी करूंगी. अटेंडेंस लगा लगा के जान ले लिया हमारी. Same here, ma'am. हाँ तो वही बोली ना, लाइक अगर आपको एनॉनमस रहकर कॉलेज का बिचिंग लिखना देन इट्स फाइन टू. जस्ट डोंट ऐड योर नेम एंड यहाँ पे लिख दो कुछ. कॉलेज को ऐसे अपने मन प्रॉपर की शाउट निकाल आउट लो देकर. guys.
अपने मन यू की नो दैट निकालता हूँ। मीम यू नो दैट मीम वहां सामने वो दिख रहा, यहाँ वहां गाड़ी घुसा दी, नहीं घुसाना था, वैसे ही। या नेक्स्ट इज आई हैव दीपांक। हाय दीपांक, इज मैम माय गर्भित फ्रेंड। आनंद saying आ नहीं रहा है मैम। आ नहीं रहा, क्या दिक्कत हो रहा है? गर्भित हिंदी में भी लिख दो कमेंट्स में, नो इश्यूज। Within demand, please check my pull request. या आई एम चेकिंग, आई एम अनुष्का, चेकिंग। गवनीत, देवयानी, गाइस एक एक करके कर रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। प्लीज बी पेशेंट। मेक श्योर दैट आपने सब किया और सो दैट इट रीचेस टू मी, बिकॉज अगर मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, सो आई कैंट हेल्प इट। लाइक राइट नाउ आई कैन सी दीपांक का हो गया। राइट नाउ देर आर 4 पुल रिक्वेस्ट विथ मी। देर सेट कोडर, कियो थियो, देर स्टूडेंट यशिका, मृदुल गोयल। ऑल्सो अब्दुल, आई डेंट फाउंड अनदर वन ऑफ योर्स। लाइक फिर से भेजो, वो आया नहीं मेरे तक, कुछ गड़बड़ हुआ होगा आपसे। अब्दुल अपना मीम वाला पुल रिक्वेस्ट दोबारा भेज दो। अच्छा, इन्होंने अपना सेल्फ प्रमोशन भी कर दिया, वेरी वेल। सो या नेक्स्ट वन बाय मृदुल गोयल। यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, सबको एक लाइन से शाउट आउट मिलेगा, सो अपना अपना नाम डाल दो सब कहीं पे भी। प्रॉक्सी लगा दो फ्रेंड्स की यहाँ पे। Like we do it in the classroom in college. Proxy. या नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो गाइज लाइक Karthik Batra is saying I sent you two requests. Please check. चेकिंग चेकिंग जस्ट चेकिंग। ऑल्सो जिनका हो गया, लाइक दोज हु नाउ नो व्हाट टू डू, लाइक यू नो रफ वर्क आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब नाउ यू आर रेडी फॉर हैक्टोबर फेस्ट। सो Vanshika is saying मैम मैंने सबमिट कर दिया था काफ़ी पहले प्लीज़ चेक। यार मतलब या होता तो वंशिका मिल जस्ट जाता बी ना, नहीं पेशेंट। होता। बहुत नहीं सारी हैं मैम, एक्चुअली चेक कर आई रही डेंट हैं। फाउंड हर, लाइक कहीं पे कुछ गलत किया हो परहैप्स। लाइक आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैन चेक यू अगेन। सेंड इट अगेन? फिर से एक्सप्लेन करूँ? आई ये हो थिंक गया। ही इज जॉइन लेट। Like right now I have one from Aryan, one from student Yashika and one from Sid Coder, so उनका मैं कर दी, रेस्ट आप लोग डालते जाओ। प्लीज जस्ट चेक एक बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एनी एरर देयर इज, या आप एक बार दोबारा भी डाल सकते हो। डोंट पैनिक, सबका हो रहा है, आपका मुझे कोई गलती कहीं पे कुछ छूट रहा होगा, दैट्स ओके। जिनका हो गया मजा आ रहा कि नहीं? गाइस बताओ अच्छा लगा कि नहीं, मज़ा आ रहा है करने में काम? हु सेट कोडर, अब मैं सेट कोडर का कर रही हूँ। जल्दी भेजो, अब तो मतलब मुश्किल से एक या दो बचे हुए हैं, कहीं पे कुछ एरर आ रहा, मेक श्योर यू कंप्लीट ऑल दी स्टेप्स। लाइक मर्ज पुल रिक्वेस्ट तक, जहाँ तक आपके हाथ में है ग्रीन सा वो शो हो रहा, वहां तक जस्ट कीप डूइंग इट। हम कमेंट्स का तो पता नहीं, पर मेरे को अभी ये इतना एक्साइटमेंट हो रहा है इसका, मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है इसे करने में। एंड जस्ट सी ना, लाइक अभी मैंने स्टार्ट किया, आई हैड बस मेरा एंड अनदर गाइज नेम देयर, एंड नाउ वी ऑलरेडी हैव 52 लाइंस ऑन दैट कोड। Go under extreme pleasure. Thank you, bro. Yeah, I'll just go to the comments I'm once. also feeling good. Please check extreme pleasure. पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज आ रहा, तो यस यू कैन क्लोज दैट Yes, नाउ। yes, हो चुका है। मेरे को शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो।
लाइक मैंने 24 का यहाँ पे चेक माई स्क्रीन, देयर 24 क्लोज, वन ओपन. सो वन ओपन इज बाय स्टूडेंट यशिका एंड 24 क्लोज का हो गया. आई नीड योर गाइज, व्हाट डू आई से, पीआर हियर, ताकि मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए. ऑल्सो अगर अभी नहीं हो पा रहा, लाइक वी नीड टू रैप अप इट सून ना, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने का आए हैं. सो इन केस नहीं भी हो पा रहा, यू हैव टाइम टिल टुडे इवनिंग, जस्ट डू इट. बिकॉज शाउट आउट ऐसे भी रात को ही, मतलब 7 बजे तक वी आर प्लानिंग. सो जस्ट Guys, गो if थ्रू there is यूट्यूब any वीडियोस. problem, AR क्लब कम्युनिटी का 24/7 सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है. आप कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो. ही और अगर इफ़ यू गाइस वांट तो हम आपको स्पेशल सेशन भी दे सकते हैं इसके ऊपर दोबारा. सो डोंट वरी अबाउट इट. कोई भी क्वेरी हो तो आप एक बार पूछ लो एंड देन विल सॉर्ट इट आउट. yeah, and there's Cheerio Theo is sweet enough to offer me 1 2 t-shirts extra as Guru Dakshina. I'm honored. हमारी Yeah. तरफ से गुरु दक्षिणा. यार लाओ और लाओ, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है मेरे को, और चाहिए मुझे भाई एक टिश्यूज. मेरी बनती है यार. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट राघव, जस्ट अभी कर लो एक. यू कैन जस्ट पॉज योर सेल्फ और एनीथिंग, लाइक कर लो अभी. नॉट एन इशू मैम. मेरे साथ तो वैसे भी मयंक भैया है तो मैं तो कर ही लूँगा. हाँ, कर लो कर लो. मेरे को चाहिए यहाँ पे सबका नेम, अभी जल्दी लाओ भी. अच्छा लगेगा जब once you're done with hackathon and you have the Hacktoberfest and मैम you have बी your रेन इज सेइंग मैम इनसाइट में नेम शो होगा ना. inside, inside my name. I didn't understood that, but like yeah, होगा as far as I know. सिमरन कैन यू चेक माय पुल रिक्वेस्ट. और मुझे नहीं दिख रहा है. चलो मैं फिर से एक बार स्टेप्स बता दे रही हूँ. जस्ट ये showmili 1818 slash Hacktoberfest demo पर जाओ. Then for this project, once you click on fork, यहाँ पे यूजर नेम स्लैश आपका जो भी जिस नेम से आपको बनाना हो अपने कॉपी में, हम कॉपी वर्ड यूज करें टू make you feel relate to it, like just imagine it's teacher ने बोर्ड पर जो लिखा and you are copying it on your local computer. So जब आप आपके कॉपी में आप यूजर नेम, बिकॉज आपका आपका नेम लिखा रहता है आपके कॉपी पे, स्लैश आप उसका नाम क्या लिखना चाहते हो, चैप्टर 1 या चैप्टर का नेम लिखना है, वट एवर. And then click on create fork. Once you're done with create fork, आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर वो फोर्क का सिंबल दिख रहा होगा, somewhat like this, ये. Then आप जस्ट यहाँ पर आओ, क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन ये रीडमी फाइल में. कार्तिक बत्रा इज सेइंग मैम प्लीज रिफ्रेश द पेज. हाँ, आई जस्ट पुट अप. आई एम डूइंग दैट. सो यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, लाइक योर नेम एंड योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेफर्ड, एंड यू आर गुड टू गो. जस्ट टाइप आपका हेडिंग क्या है, लाइक एक कुछ होना चाहिए ना, लाइक प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो. नेवर एवर कमिट टू मेन ब्रांच, क्रिएट अ न्यू. जैसे मैंने अभी कर दिया यहाँ पे मेन ब्रांच लगभग. क्रिएट अ न्यू ब्रांच, यू विल गेट अ नेम हियर. You can change it. It's okay if you keep it this way. Propose changes. And यहाँ पे are able to merge. It's good. And I'll just create a pull request then, क्योंकि कोई error आ नहीं रहा. Now I'll add a note for you know जिनको दिख रहा हो, like to that manager. Like I can even add thank you and create pull request. And now यहाँ पे check हो रहा कि if it's merge, if it can be merged or not. यहाँ पे आ रहा green है, like it's okay, good to go. Click on merge pull request and confirm. बस हो गया आपके साइड का, ये ग्रीन ब्लू पर्पल हो गया, मतलब ये मर्ज हो गया. नाउ मैं अब मेंटेनर हूँ. अब आई विल गो टू द पुल रिक्वेस्ट सेक्शन. यार आया तो नहीं है, किसी का नहीं आया अब तक. गाइस जल्दी जल्दी सबमिट कर दो. मैम इज वेटिंग.
यार मुझे मिल नहीं रहा, डालो सब यहाँ पर, कहाँ गए? You have done 5 till Simran is now. saying, till now I've done सिमरन, वो 5. आप अपने अच्छा, अपने कॉपी पे, जिनको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो आपके अपने कॉपी पर हो रहा है। मेक श्योर आप अपने कॉपी को मेरे तक पहुंचाओ मर्ज पुल रिक्वेस्ट करके, ताकि मुझे शो हो यहाँ पर कि आपने क्या चेंज किया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। एक काल ने सजेस्ट यू कि Garbage अभी is saying, सेक्टर में same steps performed 4 times, didn't go well. आई अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं ना, मैं भी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा हूँ। डू वन थिंग, चलो ये मेरा हैक्टोबरफेस्ट डेमो छोड़ो, लेट्स पिक अप एनी अदर रिपोजिटरी। जिनका हो गया इवन दे कैन प्रैक्टिस, जिनका नहीं हुआ इवन दे कैन प्रैक्टिस। लाइक लेट्स गो टू एनी लाइक रैंडम कोड पे आ जाओ आप मेरे, एंड लाइक एडिट द लाइक fork it first, एंड देन मेक श्योर कि आपका वहाँ पे नेम दिख रहा हो, एंड repository name, then create fork करो उस पे। Now click on the pencil icon, and इसमें तो छेड़छाड़ मत करना क्योंकि ये कभी कभी काम आता है। Just add anything, add your name and as uh, add hashtag and then your name, and just create a new branch, update the post changes। अब आ रहा है able to merge, क्या चेंज किया वो दिख रहा। create pull request, again create pull request, यहाँ पे चेक हो रहा है एंड इट्स गुड। मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म हो गया, ये तो सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। एंड आपको यहाँ तक करना है, आपको ये पर्पल दिखना चाहिए प्रॉपर। एंड देन आई एज अ मेंटेनर आई गो एंड चेक कि कुछ आया है कि नहीं। ओके, सो आई गेस दैट वाज इनफ। लाइक आप करते रहो, आई कीप चेकिंग, कोई आएगा तो आई मेक श्योर टू मर्ज इट। टिल देन डाउट्स प्लीज। ये आप एक काम करना है, बैठ करके आराम से करना, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो जस्ट गो टू यूट्यूब एंड ट्राई करो। मतलब कीप हसलिंग, जब तक ना हो आज खाना मत खाना। कर लो एक, एंड मीनवाइल जस्ट शूट योर डाउट्स जो भी है। Guys, now Q&A part is begin. तो आप अपने doubts कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। एंड दोज हु आर ट्राइंग एंड शो नहीं हो रहा, आई एम रियली सॉरी। मतलब आई नो कितना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। देयर Ran, Shetri, there's Simran Gulani, there's Devyani and Garbit and Karthik. So I'm sorry guys, but कोई बात नहीं, करते रहो, हो जाएगा, that's okay. And हाँ, अपने अपने Q&As like questions डालते जाओ and I'll answer them one by one, because we'll be wrapping it up by 4. So you have 5 minutes now. Ishpe Singh is saying, ma'am, please check in random quote. Okay, random code पे right. यार ट्राई तो कर रहे हैं यहाँ पे लोग, फिर भी आना तो Ma'am, चाहिए। Harshit Maheshwari is saying, can you suggest any Hacktober accepted repo? या आई सेड ना, जस्ट फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड लाइक अभी मैंने डाल रखे होंगे वहाँ पे, 2-3 अभी भी होंगे। लाइक आई बी पुटिंग जिन जो मेरे को लगेंगी हाँ दीज आर इजी टू डू देयर, एंड वी कैन Yeah, सिंपली bro, after this, I'll put the link of ma'am social media handles here. You can check it there. वन सेकेंड। ओके, सो आई एम नाउ डन विद दिस। आप लोग करते जाओ यहाँ पर, मैं चेक करूंगी एंड मर्ज करते जाऊँ, मुझे नोटिफिकेशंस आ जाया करेंगे। आई एम क्लोजिंग दिस टैब फाइनली, एंड हैक्टोबरफेस्ट में आई होप And यू ऑल आर ma'am, रजिस्टर्ड। please यस, also you get me know अगर कोई न्यू रिक्वेस्ट आए तो मैं भी बता सकूँ उनको। ओके। लाइक एक काम करते हैं ना, ऐसे भी शाउट आउट देना ही है क्योंकि
वी कैन नॉट कीप डूइंग इट लाइक फॉरएवर, राइट? बिकॉज बच्चे बोर हो रहे होंगे ना, बाकी कोई क्वेश्चंस हो गए एंड वो Here कॉन्ग्रेचुलेशन is राघव. Tarun Zone with us. Raghav sir, you are a good speaker. Yeah. Thank you, So, bro. Thank you okay, so huge much. round of applause for Raghav वहीं से, because हम तक पहुंचेगा नहीं, virtual है, but still, yeah. Thank you, So, ma'am. Thank you so much. here are my socials. Just इसके बाद कोई भी doubt हो रहा तो just ping me there, and I'm sorry Yeah. but we are now done with the PR merging thing. आप कर दो, मैं शाम तक I'll check and merge it because I haven't slept, so I'll now sleep like anything, and मैं कर दूंगी, and Even the after winners the I session, will shout. when you will do the process, you can ask in the AR Club community. I hope you all joined. Yeah, and just like अब सब proper questions डालो अपने, and uh, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले करो. क्वेश्चन टाइम जोन, नो, जस्ट क्वेश्चन. Can you यूज explain the Hacktoberfest again? You didn't join at that time. सो होता क्या है, ओपन जैसे बहुत सारे डोमेन है, लाइक दिस AI ML क्लाउड एक्सेट्रा, वैसे ओपन सोर्स भी एक डोमेन है. अब ये भी सुनेगा, या सो ओपन सोर्स भी एक डोमेन है. सो व्हाट वी डू इज कि अब सबको डर लगता है वो टर्म से कि ओपन सोर्स साउंड स्कैरी, से हाई टू क्यूट स्पीकर्स. तो ओपन सोर्स साउंड स्केरी, बट व्हाट वी डू, इसलिए जो डिजिटल ओशन वाले हैं उन्होंने क्या किया, दे केम अप विद अ प्लान दैट आई विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, एक हैकटोबर फेस्ट इवेंट करते हैं, एंड देन उसमें क्या होगा कि इवेंट में विल हैव अ छोटा सा क्राइटेरिया, जस्ट लाइक पीपल, लाइक वो डर होता ना मन में कि यार ये क्या है, वो डर निकल जाए, एंड पीपल वर्क ऑन ओपन सोर्स. लाइक अभी जस्ट हमने किया ना, यही था ओपन सोर्स, यही होता है. ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट दूसरे होंगे और समथिंग, बट इट्स ऑल द सेम. सो इसलिए टू किक दैट फियर आउट ऑफ योर माइंड एंड गिव यू अ kickstart to start your career in open source, Hacktoberfest was initiated. टी शर्ट कैसे मिलेगी? टी शर्ट तो आपको मिलेगा वंस यू आर डन विथ व्हाट डू आई से, लाइक आपको जब वहाँ 4 आउट ऑफ 4 शो रहे होंगे ना, तो बाय द, अच्छा हाँ, 30 अक्टूबर तक मेक श्योर कि 4 आउट ऑफ 4 मिनिमम रहे, नहीं तो चांसेस आर कि इनवैलिड हो गया एंड यू विल मिस इट. सो हमेशा एक दो एक्स्ट्रा लेकर चलना. So you'll receive a form from them to fill this, and you know will contact you and send you the goodies and stuff. और AR क्लब का सर्टिफिकेट का एक्चुअली आई एम नॉट मच श्योर अबाउट देयर क्राइटेरिया, लाइक जिन्होंने Ma'am, अटेंड किया after उन्होंने. verifying that कि जो participants हैं उनको verify करने के बाद we'll make a list and then send the Google form and mailing their certificate to their mail IDs ओके or परफेक्ट. might be on social media platform. So वेरी. आप टेंशन मत लो, सर्टिफिकेट और गुडीज आपको मिलेंगे इफ यू डू द वर्क एज मैम गाइडेड यू. जैसा मैम ऑल्सो ने ऑल्सो बताया वैसे करोगे तो. जिन्होंने, चलो इसमें चीटिंग नहीं करते, जिन्होंने लेजिट ट्राई किया अभी मेरे बोलने के बाद से, एंड लाइक जिन्होंने हुआ ना कि लाइक जिनका मर्ज नहीं हो पा रहा, कोई इशू आ रहा, और आपने लेजिट ट्राई किया, सो टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, टैग मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई विल गिव यू अ सेपरेट शाउट आउट. या जिन्होंने, राघव पोज समथिंग, या मैम. जिन्होंने लेजिट ट्राई किया कुछ पीआर डालने का, उनका हो नहीं पाया ड्यू टू सम इश्यूज, या लाइक आफ्टर आई क्लोज दैट पार्ट, सो मतलब बी ऑनेस्ट, अगर हम सच में किया, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल, एंड मैं शाउट आउट दे दूंगी आपको. ओके. ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ये जस्ट टू ऑनर दीज पीपल, आई विल गिव यू शाउट आउट. ओके, या क्वेश्चंस. राघव, may I have the questions please? या मैम. एक्चुअली बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे सर कमेंट्स. सर मैं आपके कॉलेज का नहीं हूँ तो मुझे गुडीज कैसे हुडीज तो मिलेगा? आपको वहां भेजा ना, हैक्टोबर. ये कॉलेज लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे सारे कॉलेज के थे, मेरे कॉलेज का भी फ्रेंड थे यहाँ पर, 2-3 को आई और सॉ. नेशन वाइड इवेंट है तो गुडीज आपको पोस्ट इवन की वर्ल्ड जाएगी वाइड, इवन वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड. ओके. ग्रेट.
Ma'am, what is the draft pull request by Okay, draft Mokshita? pull request something when you compose a pull request but आपने वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया. So just like आपको कुछ पोस्ट करना हो सोशल मीडिया पे एंड जब आप करते नहीं हो तो वो ड्राफ्ट बन जाता है. सेम चीज़ है, मतलब आपका बना हुआ है, आपने उसे प्रॉपर फुल लास्ट स्टेप तक नहीं किया, इसलिए आपको वो ड्राफ्ट बन गया है एंड इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा. मेक श्योर वो पूरा आर्यन ग्रीन से पांचाल, पर्पल तक आ जाए एंड यू गुड टू गो. मैम हैकटोबर फेस्ट की साइट पे तो अपडेट ही नहीं हुई नंबर ऑफ पुल रिक्वेस्ट. ये आपका तब होगा जब आप किसी हैकटोबर टैग वाले, लाइक मेरा वाला हैकटोबर टैग का नहीं था, आई वाज जस्ट इट वाज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. तो आप प्रॉपर किसी हैकटोबर टैग वाले पर करोगे, लाइक आई शोड यू हाउ टू डू इट. देन यू जस्ट आप अपना पुल रिक्वेस्ट अपने तरफ से काम कर दो, बाकी उनकी जिम्मेदारी. एंड दे विल चेक एंड इफ दे फाइंड इट ओके देन दे विल मर्ज इट. आपका वो 24 आवर्स में मॉडिफाई हो जाएगा. मैम, हाउ टू गेट Nitin दैट is कोड? saying how to get that for. So जैसे आपने मेरे में किया वैसे ही just pick any 5-6 projects which you find good and make some changes in there. Make sure कि अलग अलग organizations के हो ताकि एक diversity रहे and आपका fair chance रहे accept होने का. You don't look like you're spamming. So उसमें हो जाना चाहिए. And थैंक्स ब्रो. लगता है ये तो yeah. कोई मेरा ही फैन आ गया. Yeah, like we have Harshit, and yeah, I got 2 PRs in waiting list in Hacktober site. I need 2 more to complete. How can I find Hacktober Repo? So, firstly, do not stick to just four. I'll suggest कि at least 8 रखो to be on the safe side because trust me बहुत सारे last तक invalid हो जाते हैं. मैंने 12 किए थे तब जाके मेरे last दिन भी एक मेरे invalid हो गया and then I had to 1-2 घंटे बचे थे and I had to again do it. तब जाके मेरे 4 हुए थे last time. क्योंकि इतना क्राउड रहता है एंड गुड हैकटोबर रेपोज के लिए आई एम सॉरी गुड हैकटोबर रेपोज के लिए एज आई सेड फॉलो मी ऑन ट्विटर. आई ट्वीट सम. आई हैव प्रीवियसली ट्वीटेड. आप 1-2 दिन पहले के ट्वीट्स देखना एंड इवन नाउ आई ट्वीट सम बिगनर फ्रेंडली रेपोज देयर हम सो तरुण इज लेकिन सेइंग कि मैं स्कूल में हाँ हूँ तो जी. क्या मैं मेंबर बन सकता हूँ या कर सकता हूँ. First of all, kudos to Tarun for starting so early. Like I know people fourth year में होते हैं, उनका idea नहीं होता. Not that it's a bad thing, but it's great that you started early. Congratulations. And इसमें कोई restriction नहीं है. You Congratulations just need a तरुण. GitHub profile and good to go. मेंबर का कोई सीन नहीं है, जस्ट आप रजिस्टर करो, आपके पास GitHub प्रोफाइल होना चाहिए. जैसे मैंने बताया वैसे आप कंप्लीट करो एंड हो गया फिनिश. यू गुड टू गो. आ जाएगा टी शर्ट आपके पास. ऑल्सो गाइज लाइक कर दो यार, इतना मैंने से पढ़ाया, मेरे को भी अच्छा लगेगा. ये लाइक करो सब वीडियो, जितने लोग भी हो. और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना यार बाद में. हाँ, अभी कमेंट्स. और जब ये पोस्ट जाएगा ना तब भी उसमें नीचे लिख देना कि लाइक करो, मुझे अच्छा लगेगा. ओके, जस्ट मेक एन AR क्लब पोस्ट एंड तो सर्कुलेट कि मैंने बोला है कि लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा. घर पापा बोलेंगे बेटे कुछ की है, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं सब. गर्वित आनंद इज आपके I साथ थोड़ा need फन sleep. करने I के need चक्कर sleep. में. Just go through my Twitter और LinkedIn. You'll see मेरे साथ चल क्या रहा है 3-4 दिन से. कभी मीट, कभी घूमने चली जा रही हूँ. एंड अभी भी इवेंट था. At 1:30 I was out with my friends because एक और मीटअप था एंड अभी मैं आकर ही अटेंड करी. So I don't need sleep. Already done all the things. Very good. एंड वहीं एज आई सेड वो मैंने स्क्रीनशॉट आप पोस्ट कर देना इवेंट का भी. डू टैग मी, आई जस्ट शेयर. एंड जब आपको टी शर्ट मिले तो प्लीज एक पोस्ट कर देना टैगिंग मी एंड AR क्लब विल बी मतलब हमें लगना चाहिए ना कि हमने जो 2 hours डिवोट किए, इवन मोर देन 2 hours, इट्स वर्थ इट. ओके गाइस मैं देन मैम रैप के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक कमेंट्स में पिन कर रहा हूँ तो आप वहाँ से मैम को रीच कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया. परफेक्ट. सो या that's great. So yeah, let's find a today's session. Raghav, you have any ending note? Also, क्या मैम. let's on the behalf of everyone who attended, even those who left, I thank AR Club for uh, सबको एक जगह लाना is a huge thing too because individually you cannot get everyone together. So communities are there for it. So as a community, you did a great job. We had more than 500 plus registrations and we helped almost 200 plus students. So thank you for giving us this opportunity. Mayank Arora, special shout out to him.
And thank you to each and everyone present today because आप ही लोग तो हो star of the show because अगर आप करोगे नहीं PR तो क्या ही फायदा बताने का. So that's from my या side. Raghav, please continue. या मैम, तो गाइस आपके लिए आई होप दिस सेशन एड्स अ वैल्यू टू योर लर्निंग एंड थैंक यू सोमली मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड delivering such an amazing session. And also, I would like to thank my audience for supporting us. Thank you to my hard-working core team of AR Club to finding me capable to host this session. तो मेरी टीम को भी मेरे को ये सेशन देने के लिए बहुत सारा थैंक यू एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. वर्चुअली कर लेते हैं, पहुंचेंगे तो है नहीं ऐसे. अपने अपने घर में कर लो. मम्मी बोलेगी बेटी पागल होगी ताली बजा रही बैठ के बट ठीक है. Okay then I'll take your leave. या मैम, श्योर श्योर. Yeah. Bye bye. Take थैंक यू care. ब्रो क्षेत्री. सो बाय गाइस. थैंक यू ब्रो. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन ऑल. एंड अगर आपको मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप AR क्लब कम्युनिटी में पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो. और हेयर आई एम ड्रॉपिंग माई लिंक्डइन लिंक ऑल्सो, आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो इसके बारे में. सो हेयर इज़ द लिंक. और बाकी AR क्लब का 24/7 सपोर्ट सिस्टम तो आपके साथ है ही कभी भी. थैंक यू मोस्टर आलोक ब्रो, यू आर ग्रेट, सल्यूट टू यू. थैंक्स ब्रो. थैंक्स दीपाली, kudos to you. So bye guys.